Okay, so we are back. Let's start with the conservation law for the particle interaction. Okay, so the first one is the energy and the momentum. I'm audible to you? Yes, sir. Okay, so the first one is the energy and momentum. We will not go in detail of this. I will just discuss only two cases where A is decaying into B plus C and A plus B is decaying into several other particles. So we will discuss only two because we don't have to do the derivation. यहाँ पे हमें derivation नहीं करना है, एग्जाम में derivation भी कभी नहीं आएगा, तो डेरिवेशन हमें डिटेल में नहीं जाना है. वी जस्ट यू कैन डू द डेरिवेशन, वी हैव ऑलरेडी डन द डेरिवेशन आल्सो व्हेन वी आर डूइंग द न्यूक्लियर फिजिक्स. तो यहाँ पे हमें सिर्फ थोड़ा सा बस फॉर्मूला याद होना चाहिए और फॉर्मूला इज वेरी सिंपल. व्हेन आई विल राइट दैट इज वेरी सिंपल. The first one is the conservation law which we have to follow for any reaction to be allowed or to be forbidden. तो पहला जो सबसे important conservation law है that is energy and momentum, that has to be conserved. The energy neither can be created and cannot be destroyed without any reason. So that is not allowed. So you always have to do the energy conservation. And even the linear momentum and angular momentum, sometimes the linear momentum is not conserved, but the angular momentum is always conserved. So you have to do these two conservation before telling any reaction to be allowed or to be forbidden. तो सबसे पहले हम एनर्जी और वो लेते हैं, और जो हमें एग्जाम में करना होगा वो भी मैं बताऊंगी. हमें मेन एग्जाम में जो कौन से कंजर्वेशन लॉ फॉलो करने, दैट वी विल डिस्कस लेटर. तो अभी हम सिर्फ एक आइडिया लेते हैं कि एनर्जी और मोमेंटम है उसका कंजर्वेशन क्या है. So if, for example, if A is the particle and which decay into B plus C, हमारे पास say meson is decaying into another lepton and a photon, so that could be a possible thing. Or a meson is decaying into a heavier meson is decaying into a lighter mesons. So this is a simple reaction which is a very usual reaction, and we will assume this is at rest before the reaction. So it just decay wherever it is sitting, it just decay into two particle. So obviously the before the decay process, the momentum is zero for whole system, and after the decay these two will have certain momentum, and obviously they will be in the opposite sense. Means we can easily say that Pb must be equal to Pc. Pb is not proton, Pb is momentum. The magnitude has to be same, obviously, and they will go in the opposite direction. This is a very usual kind of decay process. And we can also write what is the Q value for this reaction, which is nothing but initial mass which you have started with and whatever the leftover mass which is after the decay or after the reaction, and multiply with C square. So this can be positive, this can be negative, or this can be zero. All the three things can be possible. Zero be possible hai, but zero and positive are treated as a similar kind of thing, that is spontaneous. And negative is something which is you have to provide energy to have this kind of decay. अगर Q value आपकी negative आ रही है, तो it means B और C को produce करने के लिए we need to supply certain energy to A, or we need to take this A to the excited state. Then only you can have the decay process. Or if it is decaying spontaneously, it means the Q has to be released, means energy will be released. So this is what we know about the Q. What is the value of Q, or how it give rise to the spontaneity, or you can say any kind of something like which we have already discussed, that is endoergic and exoergic reaction. तो ये दोनों वर्ड हमने न्यूक्लियर फिजिक्स में पहले भी देख लिया. एंडोअर्जिक जैसे हमारा एंडोथर्मिक होता है, सिमिलरली वी हैव एक्सोअर्जिक which is exothermic kind of thing. So, and if you have this kind of particular reaction, you can easily write that Ma minus Mb and minus Mc, all these masses are rest mass. Remember, these masses are rest mass. तो ये सारा mass आपका rest mass है. This is not relativistic mass. But when you write for the energy, that is initial energy, what was the initial energy? That is because the particle is at rest,
ए पार्टिकल रेस्ट में था तो एम ए सी स्क्वायर है, बट energy final, the final energy which you are getting, that is EB plus EC. And we cannot write only the rest mass, because when the particle has been created they will also moving. So वो जो movement होगा that will be something like a relativistic moment. वहाँ पे जो motion होगा that will be relativistic because they are moving with a very high speed. So you can always treat these sub nuclei particle as a something like a relativistic kind of energy. So this is the final energy, which is energy of B particle, energy of C particle. So that will have total energy, you can say total relativistic energy. So EB you can write as PB square C square plus MB C4 A square होगा. This is C4. This is your EB only. Plus root of PC square C square plus MC square and C4. So this is the energy of the C particle. So this is actually the total relativistic energy which has rest mass also and which have kinetic also. तो both दोनों को हमने मिला दिया. So momentum के concern में जो energy है और जो उसका rest mass energy, that we have done. So we have one equation which is this one, you can say. Another equation is this one, and the third equation is this one. So all the three equations you have to solve, and you can easily find the value of TB, which is the kinetic energy of the B particle, and you can find the kinetic energy of the C particle. You can do the calculation. अब calculation थोड़ा लंबा है, इसलिए हम डिटेल में नहीं जाते हैं, एग्जाम में भी आता नहीं है. But I will just write, and you can see the similarity between these two formula. Very simple formula. And when I write, you can easily judge what are the component we have, what are the terms we have. So this TB will be equal to MA C square minus MB C square minus MC C square. What is this value? ऊपर से किसी इक्वेशन से मैच हो रहा है? किसी इक्वेशन से मैच हो रहा है या नहीं? Q से वैल्यू से मैच हो रहा है, तो you can easily say this is nothing but a Q and 2MA C square, and this is nothing but the reactant mass energy multiplied with 2 times the reactant mass. यहाँ पे तो हमारा reactant एक ही है, we only have the one particle before the decay process. Sometimes we have several particles also. So we will see that formula also. This is very simple formula. Q divided by 2 times of the reactant rest mass energy, you can say, and this is MA minus MB, जिसका आप kinetic energy निकाल रहे हो उसका minus करोगे, बाकी सारे plus होंगे. If you have another particle, for example, if you have C, तो उसके इक्वेशन में एक टर्म और आएगा, बट माइनस सी आएगा, प्लस बी आएगा, प्लस अगर कोई और पार्टिकल डी आता तो प्लस आएगा. तो ऑल द पार्टिकल विल हैव, यू हैव टू ऐड देयर रेस्ट मास एंड माइनस फॉर व्हाट यू आर फाइंडिंग द काइनेटिक एनर्जी. तो जिसका आप काइनेटिक एनर्जी निकाल रहे हो उसको यहाँ पे माइनस लिखो. दिस इज द टर्म. सिमिलरली यू कैन राइट फॉर दिस वन आल्सो. दिस नंबर विल बी सेम, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा. यहाँ पे जो चेंज आएगा दैट विल बी एम ए सी स्क्वायर minus MC C square and plus MB C square and divided by the same number, that is 2 times of rest mass energy of reactant, that is MA, and this is same as here also. So you have the Q value here. So it is very easy. This is a very easy reaction. This is a very usual reaction which happen in the nature. बहुत सारे reaction में हमारे पास normally, for example, double boson है. Double boson will decay into 2 different kind of particle. For example, when you write this equation, neutron is decaying into proton plus, ये zero charge है, ये plus charge है, तो एक minus charge का होना चाहिए, उसके साथ हमारा anti neutrino will be attached. That is actually the electronic neutrino. शुरू में हमें ये वाला E नहीं लिखते थे, सिर्फ हम mu लिखते थे. But now we have to write E also because this is electronic neutrino concerned with the electron. So this is not the reaction. Actually, the reaction is this plus a W particle, and that W particle is what minus sign, because ये zero है, ये plus है, ये minus है. So we know this is a boson. And after this, what happens? W boson will decay into these 2 particles. So
This can be easily treated by this equation, and you can have these equations. So it is very simple. So this is decaying into these two particles. So you can have, so there are so many reaction in which this equation is followed. A is, which is at rest, and decay into B plus C. Even if A is moving, then also you can include the energy part in this particular equation. थोड़ा सा tough हो जाता है, इसलिए हम वो use नहीं कर रहे. Now let us have another case. This is one case, and we have another case, which is A plus B, and that is decaying into C plus D plus E plus several. Means one of the particle is being kept at rest. This is at rest, and one is being bombarded to the B particle. Means something like you are keeping your hydrogen atom and you are bombarding that hydrogen atom with a proton. So one proton is at rest and one proton is hitting that particular hydrogen atom. Obviously, at high energy, the hydrogen will lose its electron, and that is very obvious. So you only have the hydrogen-hydrogen interaction. Okay, or you can say proton-proton interaction. So one of the proton is coming with a very high speed, or you can say very good amount of relativistic energy, and hitting this particular proton which is at rest. And then you get several kind of particle. It is not restricted कि भाई 2 मिलेंगे 3 मिलेंगे. You can have 2, 3, 4, or you can have shower of particles. That is a possibility. That will depend upon what energy you have. This A particle, how much energy is there. If it is having energy, say 10 times of the mass of proton, so it can produce 10 protons. So that is obvious. Or it can produce 8 proton and several other things. So that is a possibility. So if this kind of reaction is there, when one particle is projectile, one particle is at rest, then you can, same sense, you can apply all these equations. You can write the momentum conservation. This momentum is more trickier. You have to write. Then you can write the Q value. Q value, it is easier, means mass of initial whatever the reactant you have, subtract the mass of whatever the final product you have, that will give you the Q value. So I will just write that directly. The requirement of this threshold value to have any certain reaction, so we can easily calculate, means how much energy I have to supply to A particle when it is bombarded on B particle which is at rest, so that it can produce 2 particle or 3 particle or 4 particle or 5 particle and so on. So we can decide what, it is the same thing which we have done in the nuclear reaction. So nuclear reaction, when we are doing the endoergic reaction, then we have a threshold value of projectile, if you remember. याद नहीं होगा, but अगर याद भी हो, so we have the theoretical, we have the this threshold value for the this incoming projectile to hit and to have a nuclear reaction. But exothermic में ऐसा कोई हमारे पास rule नहीं था. We don't have any threshold. So to have the reaction, to have this reaction to be happened, then we need certain threshold value. So we can easily calculate this threshold value depending upon what are the outcome of your reaction. जिस outcome को आप predict करना चाहते हो उसके according आप threshold design कर सकते हो कि मुझे अगर 3 प्रोटॉन चाहिए तो मुझे इतनी एनर्जी रखनी है अपने इनिशियल की, मुझे एक पायॉन्स चाहिए, एक प्रोटॉन चाहिए, एक डब्ल्यू बोसॉन चाहिए, then I need to keep this much of threshold. So you can easily do the calculation. This number is minus Q, whatever the Q value of this reaction you get, minus of Q and total mass of all initial and final particles. Total mass means you are adding all the masses of whatever the reactant you have and whatever the product you are getting, and divided by, you can say, 2 times the mass of target. So this is what you can write easily the equation. So what is the requirement of kinetic energy of A particle so that we get this 3 particle or 4 particle or 5 particle? That will be decided by this equation. So minus Q, total mass of all the, means you can say all the particles, initial and final. You just calculate all the particles which has been emitted and which has been used to do the reaction. So you just add all the masses and divided by 2 times of the rest mass. So for example, if you want to use this equation, so let me write a reaction.
proton plus a proton, that can give rise to proton plus proton plus proton and plus antiproton. First of all, can this reaction happen? Two protons is generating three protons and plus an antiproton. Yes, sir. हो सकता है रिएक्शन ये? या नहीं? What's your answer should be? कि हो सकता है नहीं हो सकता? If I am asking, is this reaction is allowed in nature or not? So what could be your answer? नहीं है, कोई आंसर नहीं है. हाँ ना कुछ बोलोगे कि हाँ नहीं पता या पता है, ये रिएक्शन हो सकता है नहीं हो सकता, ये पहले बताओ. और डू आई प्रोवाइडेड यू द इंफॉर्मेशन कंप्लीटली कि ये हो सकता है नहीं हो सकता है? वो भी रीजन बताओ कि सर अभी हमें पता नहीं, हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, हमें नहीं पता डिटेल में. हाँ, चार्ज तो कंजर्व हो रहा है ना इसमें. अगर चार्ज को देखें तो चार्जेस Yes, sir. है ना, यहाँ पे +1 टू टाइम्स है, दिस इज 3 and -1, so charge is conserved. मास यू कैन से कि नंबर ऑफ पार्टिकल इज नॉट कंजर्व्ड. यहाँ पे आपके पास 2 प्रोटॉन है, यहाँ पे आपके पास 3 प्रोटॉन है, so the proton number is not conserved. And I have said you that at low energy the proton and neutron number conservation is allowed, but at high energy this number is not conserved. So never rely कि भी जितने प्रोटॉन से हमने स्टार्ट किया था उतने ही प्रोटॉन आएंगे at higher energy. So these reactions are happening at higher energy. So now your answer should be, as per energy conservation, this can be possible. You can design whatever the energy you can design for this particular proton, and this is at rest. So you can design that. So as per energy conservation, this can be possible. But sir, we don't know other conservation law that make this reaction to be allowed or forbidden. Because अभी तक सिर्फ आपको चार्ज एनर्जी के अलावा कुछ भी नहीं पता है. बिकॉज प्रोटॉन देख के ही कोई भी कह सकता है सर यहाँ तो 2 प्रोटॉन है, यहाँ 3 प्रोटॉन कैसे आ गए? बेशक से एक एंटी प्रोटॉन है, बट यू आर गेटिंग 3 प्रोटॉन, सो हाउ दिस कुड बी पॉसिबल? सो यू कैन से कि सर अभी हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं पता है इसका. We need further more parameters to judge whether this reaction is possible or not. But as per energy conservation, this reaction is possible. So we can easily do the calculation. So how much threshold energy required by this proton to have this particular outcome? So that can be minus q, whatever the q value you have. Q value आप calculate कर सकते हो बहुत easily. That is not a big deal. And multiply with the total, you can say total mass energy, you can say means total m मैं लिख रहा हूँ and multiply with c square. So total m मैं कह रहा हूँ, तो total m you have to calculate how much total m is there and divided by 2 times the mass of this target. This is a target, this is at rest. So this is at rest. So target is, you can say mp c square. What is q value for this reaction? q value की क्या होगा यहाँ पे? q value जरा फटाफट बताओ. Mass of this, sorry, mass of this plus mass of this, that is initial mass, minus final mass, so that will be what? 2 mp minus 4 mp. यही होगा. स्टार्टिंग में पास 2 mp है, 2 प्रोटॉन है, और लास्ट में पास 4 प्रोटॉन है. Obviously the anti proton will also have the similar mass as of a proton, only the charge is different. So we have 4 proton at the end. So this is minus 2 mp. This is the total mass you are getting. Means when you're doing initial minus final, and when you multiply with c square, you get the q value. So q value is minus 2 mp c square. I'm correct? I'm correct? Yes. Yes, Okay. sir. So minus का साइन एक पहले ही लगा हुआ है, तो this will be 2 mp c square. And what about the total mass? So that will be 6 mp c square divided by 2 times mp c square. So this goes off and we are getting 6 mp c square. It means you have to provide this much of value to the this proton.
and you can easily know what is this number is. This number is 6 into 931.5 mega electron volt. So you can do the calculation, you can find the energy in giga electron volt. So that will be 5 6 नहीं 5 9 45 45 और थोड़ा सा और नंबर बड़ा है तो 45 मतलब 5 के अराउंड हो जाएगा. तो roughly this is 5 giga electron volts. So this much of energy if you provide to this one and you bombard a hydrogen atom, so there is a possibility of getting an anti-proton. कल के क्लास में फ्राइडे के सैटरडे की क्लास में someone is asking कि वो how you are getting the anti-particle. So there is a possibility in reactions or in accelerator there is a possibility of getting anti-particle, but that anti-particle get easily reacted with the particle and you just get the photon only. This is a possibility, but once the anti-particle is generated you can capture them, you can store them. So there is a possibility, but that is a very sophisticated measurement, detection and storage is required for a storing of these antiparticles. Very difficult. उसके अब ये हमारा हो गया this one energy and momentum. So I will not go in a detail of angular momentum and parity conservation. We have already done this one in the nuclear reactions. So nuclear reactions का note उठाना, उस notes में मैंने लिखे हुए हैं कि angular momentum का conservation क्या है. If initially we have a plus b which is giving c plus d, so you can easily write the same equation is used for this one also. तो parity और angular momentum का conservation पे हम detail में नहीं जा रहे हैं. We just jump to the actual conservation law which is required for the particle physics. ठीक है, तो let us come to the, और जो आपको एग्जाम में चेक भी करने के लिए आता है. तो चार्ज तो नॉर्मली बच्चे चेक कर देते हैं. हम नॉर्मली जो क्वेश्चंस आते हैं ना उसमें लिखते हैं हम कि judge whether the reaction is possible or not at least with 4 different conservation law. तो आपको 4 different conservation principle को follow करके उस particular reaction को validate करना होता है या उसको forbidden show करना होता है. तो 4 different जो आपके conservation law जो follow कर रहे हैं, that is not energy, that is not momentum, that is not angular momentum, that is not parity. They are different. So we will go in that particular detail. So let me share the Word file to you one more, and we will discuss what the different things you have to, what are the different conservation law you have to use. So the first one, which is a new, means apart from these, जरूरी नहीं कि ये वाले होंगे तो हो ही जाएंगे. एनर्जी कंजर्वेशन भी फॉलो करना है उस रिएक्शन को, पैरिटी कंजर्वेशन भी फॉलो करना है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन भी फॉलो करना है और मोमेंटम कंजर्वेशन भी फॉलो करना है. तो अपार्ट फ्रॉम दीज 4 द अदर थिंग्स व्हिच इज इंपॉर्टेंट. ठीक है, सो दैट इज दिस वन. सो द फर्स्ट, और ये मैंने नोट्स में 4th नंबर पे लिखा है बिकॉज वो चारों लिखने के बाद ही मैं इसको लिखता हूँ. एनर्जी, मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम एंड पैरिटी के बाद मैं इसको लिखता हूँ. तो आई विल राइट 4th. तो डोंट कंफ्यूज कि सर 4th पे हम कैसे जंप कर गए. तो 4th is not a new thing, it is continuation with the previous conservation law. So this is a new number which is baryon. Baryon number. Baryon number is always conserved in any reaction. अब ये जो हमने स्टार्टिंग में न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़ा था कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन नंबर कंजर्व होने चाहिए, दैट इज ओनली कंसर्न्ड विद द लो एनर्जी रिएक्शन. 100 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से नीचे का रिएक्शन है उसमें तो चलेगा, दैट इज ओके. यू कैन से कि इनिशियली मेरे पास इतने प्रोटॉन्स थे तो एंड में भी इतने ही प्रोटॉन्स होंगे. रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी हो सकती है बट नंबर ऑफ प्रोटॉन कैन नॉट चेंज. ठीक है, सो नाउ द एनर्जी स्केल इज हाई. हमने पिछला एक जो क्वेश्चन देखा उसमें 5 गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी है, तो दैट इज वे अवे फ्रॉम द 100 मेगा. तो अब हमारा जो एनर्जी स्केल है वो गीगा में मूव कर रहा है या सेवरल हंड्रेड्स ऑफ मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में. So when this kind of energy is there, then you don't rely, or even the things that proton conservation is not followed or neutron conservation cannot be followed. Means you're starting with 10 neutron and you don't end with the 10 neutrons. You can have the neutron which is increased in a several value, or that can be decreased, or that can vanish up. So this conservation you have to forget. So higher energy scale में आपके पास न्यूट्रॉन को न्यूट्रॉन प्रोटॉन कंजर्वेशन को बेटर वे में कह सकते हैं न्यूक्लियॉन कंजर्वेशन. तो न्यूक्लियॉन कंजर्वेशन इज डिस्ट्रॉयड, वी कैन नॉट कंजर्व द न्यूक्लियॉन्स. So now what we can conserve is the baryons. So baryons conservation is
मोर इम्पॉर्टेंट। और अभी हम थोड़ा सा पार्टिकल फिजिक्स में भी थोड़ी सी एनर्जी स्केल वैसी है जहाँ पे क्वार्क स्ट्रक्चर नहीं आ रहा है, सिर्फ अभी भी कंपोजिट फॉर्म में क्वार्क फॉर्म कर रहे हैं, मींस पेयर में है या ट्रिपलेट स्टेट में है। तो बेरियन नंबर होता है क्या, पहले हम बेरियन नंबर देखते हैं, व्हाट इज बेरियन नंबर एंड हाउ वी असाइन दिस नंबर टू एनी पर्टिकुलर पार्टिकल। सो द बेरियन नंबर is denoted by B, which is equal to +1 to all the baryons. If any particle in your reaction or in your decay process, if it is a baryon, then its baryon number is +1. For example, neutron, proton, delta, summation, epsilon कह सकते हैं, या epsilon का दूसरा भी नाम है. I will give you the name for this one. Epsilon, you can have omega, you can have several other particles. So for whenever you find these kind of particles, you have to assign them with a baryon number B equal to +1. ठीक है? Then another set of particle whose baryon number is -1. So to all the anti-baryon, न्यूट्रॉन का एंटी पार्टिकल, प्रोटॉन का एंटी पार्टिकल, डेल्टा का एंटीऑन, and so on. All the anti-baryon will carry -1 as the baryon number. This is what you assign. This is a new quantum number. NLMS के अलावा ये अब न्यू क्वांटम नंबर्स हैं जो आपको पार्टिकल को असाइन करना होता है। NLMS सिर्फ आपके एनर्जी, वेव फंक्शन, पैरिटी, एंगुलर मोमेंटम को ही जज कर पाते हैं, या यू कैन असाइन विद दोज काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज, बट दीज आर द न्यू नंबर्स दैट इज to justify your Pauli exclusion principle. These number has to be defined. This is not in कहाँ से है कैसे है, we have to introduce these numbers. Okay, and we will introduce or we will assign 0 to all non-baryon. It means pi particle, or you can, I will write mesons and leptons. They will be assigned with 0 baryon number. तो कोई रिएक्शन है, उस रिएक्शन में अगर ये पार्टिकल आ जाते हैं तो उनका बेरियन नंबर 0 है, उनका बेरियन नंबर, या उनका बेरियन नंबर, यू कैन से बेरियन इज अ क्वांटम नंबर विच इज 0. एंटी बेरियन के लिए हमारे पास -1 है, और जितने भी हमारे नॉर्मल बेरियन है, एंटी मींस नॉट स्ट्रेंज, कंफ्यूज मत होना, दिस इज अ स्ट्रेंज, इसका भी एंटी हो सकता है, so that is a different thing. So baryon and anti-baryon, so +1, -1 and 0. ठीक है? In most of the reaction, means strong, electromagnetic or weak interaction, this number is to be conserved. You cannot defy this number. अगर ये कहीं नंबर आपका मैच नहीं कर रहा है रिएक्शन से पहले, रिएक्शन के बाद में, या रिएक्शन के डीके से पहले या डीके बाद में, then that reaction is not allowed in nature. It has to be conserved. ठीक है? अब हम चेक करते हैं कि हमारा जो पिछला रिएक्शन था, P plus P and P plus P plus P plus with minus, that is anti-proton, माइनस साइन है और ऊपर हमने बार लगा रखा है. Now check the baryon number. So baryon number initial before the reaction, that is how much? 2. Baryon number final, how much that is? 1 plus 1 plus 1, 3. This is anti-baryon, so I have to put -1, so that is equal to 2. So this is conserved. This reaction is allowed as per baryon number conservation, which has to be conserved in any reaction. So that is why this reaction is possible. बाकी केस एनर्जी आपको क्या रखना है, वो एनर्जी डिसाइड करेगा, एनर्जी का कंजर्वेशन, एनर्जी मोमेंटम का कंजर्वेशन डिसाइड करेगा हाउ मच एनर्जी यू हैव टू कीप टू हैव दिस रिएक्शन. बट व्हेन यू राइट दिस रिएक्शन, डज इट बीइंग फॉलोड और नॉट? So you can check by these numbers. These are quantum numbers. बाकी तो एनर्जी तो आपको रखना ही रखना है. अगर उतनी एनर्जी नहीं रखोगे तो आपके पास 3 प्रोटॉन आएंगे नहीं या 4 प्रोटॉन आएंगे नहीं. You will get different things. Are you getting the things कि हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, या कहीं ऐसा तो नहीं कि वेग जा रहा है? Yes sir, clear है. Clear है. Okay, so ये तो एक very simple example है. There are several examples. I have one more that is, but वो हम बाद में करेंगे जब एक बार बेरियन नंबर, बेरियन पार्टिकल्स को एक बार क्लासिफाई कर लेंगे ना,
or different quark model के according, then we will discuss ki what are the different baryons. But I have given you some number. अगर ये appear होते हैं, they are baryon. You have several other also. Okay. So I have written one more example, which is lambda 0 is decaying into p plus pi, and p is a proton and pi is a meson. तो हम बाद में डिस्कस करेंगे, उसे अभी नहीं कर रहे हैं. ठीक है, अभी सिर्फ हम नेक्स्ट पे जाते हैं, which is another conservation law which is to be followed for every reaction. Fifth one, that is lepton number. Lepton particles the, now lepton number. So lepton number is also defined in such a way as we have defined for the और थोड़ा सा ये और ट्रिकी होता है. वैसे तो ये कम पार्टिकल कम रिएक्शंस में यूज होता है, जहाँ पे आपके वीक इंटरेक्शन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन वहीं पे यूज होंगे, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होंगे या इलेक्ट्रॉन्स होंगे. और मैक्सिमम केसेस में आपके पास बेरियंस होता है, तो यू ओनली यूज द बेरियन number. But lepton number is more trickier than baryon because lepton comes in a different generation. आपके पास इलेक्ट्रॉनिक जनरेशन है, म्यून का जनरेशन है, टाउन का जनरेशन. तो डिफरेंट जनरेशन के लिए we have to define different lepton number. But you can always use a single number also. That is also a possibility. So lepton number L will be equal to, इसको हम L से डिनोट करते हैं, L, capital L. So that is +1 for lepton. For lepton, if it is a lepton, any particle which is a lepton, then you have to assign +1. And a bit subdivision for this one. We have three different numbers, Le, L mu, and L tau. That is +1, that is +1, that is +1 for electron and for muon and for tau. तो वैसे तो कई बार रिएक्शन में हम, if your reaction is having a combination of these two particles or these two particle or these two particle, हो सकता है इनका combination का कोई reaction हो कि electron plus muon is giving you something, then you have to check these two quantum number. If your reaction is only having a mu or E or tau which is involved, then you can easily write L only, because वहाँ पे एक ही kind of lepton है. You can, if you have a same kind of lepton, means if you have throughout the reaction you have only electrons or only muon or only tau, then you write just L. Or if your reaction have a combination of leptons, means different generation of leptons, then you have to write these different numbers. You have to check these different number for a conservation. Then L will be equal to -1 for anti-lepton. जैसे उसमें था हमारे पास. So Le, L mu, L tau, that will be -1, that will be -1, that will be -1. For what? For, यहाँ पे क्या लिखेंगे? Positron. Means positive muon and positive tau. So again, we have three different numbers. And if your reaction is involving any one of this kind, then you write just L. Okay. Then we have L equal to 0 for, इसके लिए रखेंगे L equal to 0 for all non-lepton. तो अगर कोई lepton नहीं है, if it is not in a class of lepton, then L will be 0 for that particular number. So they are hadron and you can say field particles. तो जितने भी field particles हैं और जितने भी आपके hadrons हैं, their number assigned, L number assigned for these particle is 0. ठीक है, let us take a reaction that it is allowed or not. Muon is decaying into electron plus ये reaction पहले भी लिखा हुआ है जब हमने इलेक्ट्रॉन का reaction लिखा था, that these are actually heavy particles, so they will decay, they are not stable particle actually. So this is yes, अच्छा इलेक्ट्रॉन म्यून एंड टाउ मैंने कहा, ठीक है, चलो यहाँ पे लिख देंगे उसे. So let us check कि this reaction is allowed or not.
So first we will check the electronic lepton number. So this is sometimes it is called as electronic lepton number. So this is a lepton and this is a normal lepton because it is a minus charge. So this is a normal lepton, but it is not electronic lepton. So this number is 0. And let us check the other side. This is a electronic lepton. So this number will be what? What I have to write here? यहाँ पे क्या लिखना है? ये इलेक्ट्रॉन है और ये मुझे इलेक्ट्रॉन नंबर इसका लिखना है, तो क्या लिखूंगा? +1 -1 ये 0? +1. +1. What about this one? This is an electronic lepton. Neutrino is also a lepton. It is an electronic lepton, but it is a anti-lepton, anti-neutrino or anti-electronic neutrino. So this will be -1. अगर ये ऊपर बार नहीं होता तो ये +1 होता, अगर बार नहीं होता तो ये +1 होता. Because bar is there, so we have written that for anti-lepton. So this is -1. What about this one? This is concerned with muon. This is not electronic case, so this will be, it is not electronic, so this will be 0. So the reaction is for as per electronic lepton, this reaction is allowed. Let us check the muonic lepton because muon is also involved. So this is 1, this is 0, this is electron, and obviously this is also 0. And what about this? This is a normal neutrino and this is muonic neutrino. So this is also 1. So this is allowed. ठीक है, बाकी tau वाला में यहाँ चेक करने की जरूरत नहीं है because there is nothing tau. And if I write only L, for example, चलो हमने इसको हमने individually उससे चेक किया, अगर मैं L के केस में मैं लिखता तो क्या होता? This is a lepton, so I would have written 1. This is a lepton, I would have written 1. This is an anti-lepton, so I would have written -1. So with this also it is a lepton. So this is also allowed. So with only lepton if you're writing, then this is also saying कि yes, it is allowed. तो इंडिविजुअल भी आप चेक कर सकते हो अगर कॉम्बिनेशन है डिफरेंट लेप्टॉन्स के, और अगर आपका सिंपली लेप्टॉन लिखना चाहते हो, यू कैन दिस इज अ लेप्टॉन, सो इट इज 1. This is a lepton, it is 1. This is an anti-lepton, so this is -1. This is again a lepton, so this is +1. So 2 - 1, 1, and before that, that is 1. So this is also allowed. So you can check that also. Sometime बच्चे क्या करते हैं, दोनों चेक करते हैं कि भाई इलेक्ट्रॉनिक है, टाउ है या कौन सा है, उसके हिसाब से वो लिखते हैं. कई बार बच्चे सिंगल भी लिखते हैं, तो दैट इज नॉट अ बिग डील. आप इंडिविजुअली भी लिख सकते हो और सिंगल कॉमन इलेक्ट्रॉन का वैल्यू भी लिख सकते हो. And you can write one more reaction. Let me write one more reaction. Mu is decaying into electron and plus a gamma. So will it be possible? यहाँ पे लेप्टॉन अगर कॉमन लेप्टॉन चेक करोगे तो इट इज पॉसिबल, बट इफ यू चेक Le means electronic lepton number and muonic lepton number, then it is not possible. So this reaction is actually not possible. So sometimes this give you a error also. बच्चे ज्यादातर इसलिए individually करते हैं. So because this is a lepton, you will write 1. This is a lepton, you will write 1. This is a non-lepton, this is a field particle, you will write 0. So this is a conserve as per this one. But if you check in detail, let us check Le. So Le is 0 and 1 and 0. So the number is not matching. L mu, if you check 1 and after that it is 0. So that is also not matching. So individually these lepton number are not matching. So it is better to use individual lepton numbers. Now we come to the isospin, which you have to check. And isospin में दो quantum number involved है. One is T and one is T3. T3 is your Z component kind of thing, or it is called as third component of isospin. So isospin is one thing and third component of isospin is different thing. ठीक है, तो normally maximum reaction में हमारा isospin conserve होता है, but weak और electromagnetic interaction में isospin में conservation follow नहीं होता, it is violated. So strong interaction अगर है तो isospin conserve होगा,
Otherwise, it may not conserve. Okay. So I will use another file because we have to calculate this one also. We have to learn how to calculate the isospin. ठीक है, तो एक और मुझे word file share करने दो, and in that I will discuss the isospin. So lepton and baryon is clear to you? Is it clear to you? Yes, sir. And you can assign them, and you can do the calculation, and you can allow, I can say the reaction is allowed or not. So हमारे पास 4, 5 और ये this one is 6th. So this is the 6th quantum number, which is isospin. हमने isospin स्टार्टिंग में भी डिस्कस किया है, बट उसमें थोड़ा सा फॉर्मूला हमारे पास बहुत प्रॉपर नहीं था, because that is concerned with the proton and neutron number, and we know the proton and neutron number is not conserved in any high energy reaction. So how we can use that formula? If you are doing a reaction in which proton and neutron number is not conserved, then how you can use that formula? That formula which we have discussed in the nuclear physics and reactions, that is concerned with only nuclear reaction, and normally that is low energy nuclear reaction, in which electron number of neutron and number of proton is conserved. But if this number is not conserved, then you need to define a new formula, because you don't know, because you all obviously number of proton or neutron to conserve है नहीं, और formula में हम उसी number को use कर रहे हैं, so it will give you the wrong answer. So we have to use a different formula. So normally the formula is, first we calculate the third axis, T3. और isospin का classification कहाँ से आया था? This one. Neutron and proton, they both have spin half. They are spin half particle. And strong force or any reaction has to understand the difference between these two. So fictitious number is defined, and for proton it is plus half, and for neutron it is minus half. तो हम एक new number define करते हैं, which is called as isospin, or you can say isotropic spin. Means spin is uniform for both the particle, but for our calculation, for our understanding of these particles, we assign them plus half as T3 value, and for this we assign minus half as T3 value. And the isospin for these two particles is half only, that is half. तो T की value half है, but T3 की value दोनों की different होगी. So you can say these two are similar kind of particle, and there are two different state of the same kind of particle. You can say that is a nucleon. So there is a nucleon, and nucleon is divided into two parts having these kind of values. So nucleon is one thing which is being as a nucleon in a strong interaction. In strong interaction को नहीं पता कि proton क्या है, neutron क्या है. It always treat them as a nucleon. So what our understanding, we know that proton is different and neutron is different. So we have to assign something a different number so that we can do the certain calculation. So that is why we are defining these numbers. So they are not exactly, you can say, a real number, but in the sense when you do the calculation, that is directly related to the charge. That is directly related to the charge. तो ये isospin जो number है ना, that is something like charge conservation. तो अगर charge conservation आप नहीं भी करते हो अपने reaction को check करने के लिए कि allowed है या forbidden है, even if you do the isospin calculation or isospin number conservation, you are actually doing the charge conservation only, because when I will write the formula, you can see that charge is involved in the calculation. So T3, the third axis of the isospin, is equal to Q divided by E minus Q bar divided by E. This is the formula. And what is Q? Q is charge of the particle, whichever the particle, for which particle you are calculating the isospin, third component, that is charge of the particle. Obviously in the terms of E. Charge of लिख रहे हो, E के terms में लिख रहे हो. What is Q bar? Q bar is average charge of the multiplet or set of
particles having same p value. All the set of particles whose t value is same means they're one family of particle, you can say. The neutron proton is one family of particle. Delta have 4 particles, so that is also one family of particle, but all the delta are different, but they're coming from the same particle. Summation is one kind of particle and it has 3 different state: summation plus, summation minus, and summation 0. So they all are summation. Then you have epsilon, then you have sigma, then you have omega, and so many. So you have set of particles. Within that you have different charges, or you can have different properties, but they all come from the same family. So that we normally call as multiplets, or particle with having a same t value. For example, proton, neutron, they have t value half, so they are same kind of family. एक ही family से belong कर रहे हैं, but उनका T3 that will be different. So we will calculate that also. So let us check for neutron and proton only. So let us calculate for these two कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के लिए हमारे पास T3 की वैल्यू, अगर फॉर्मूला मैंने ये डिफाइन किया है. E is the electronic charge. E I don't have to write, that is an electronic charge. So for proton, I will write T3 in bracket for proton. So you will use this formula. अब हम न्यूट्रॉन प्रोटॉन के सेंस में, न्यूट्रॉन प्रोटॉन के सेंस में क्या था, प्रोटॉन 1 है तो 1 माइनस दिस डिवाइडेड बाय 2 कर रहे थे, अगर न्यूट्रॉन है तो 1 माइनस दिस डिवाइडेड बाय 2 कर रहे थे. दैट वाज व्हाई इट इज गिविंग मी +1 and +half and -half. So here also you will get the same number, but the calculation is different. So what is the charge of proton? That is +1 E divided by E. What is the average charge of set of these two particles? What is the average charge? Average charge क्या होगा? 1E. इसका 0 है, दूसरे का 1E है, और पार्टिकल कितने हैं? 2 हैं, तो that is +half E. This is the average charge. So -half E divided by E. So this will give me 1 minus half. E cancel हो जाएंगे. 1 minus half, so that will give me half. That is +half. T3 of neutron. न्यूट्रॉन का चार्ज क्या है? 0 डिवाइडेड बाय E. 0 E लिख सकते हैं. We can write. What happened to my pen? This is E. यहाँ पे क्यों नहीं लिख रहा है? Then we have, let me just shift to. एक साल में ही टैब की हालत खराब हो गई. Okay, now. So this is 0 E minus, again the average will not going to change. Average तो वही रहेगा उस family का. So that will be half E divided by E. So now this is 0 minus half, so that is equal to -half. And for both the cases, the T is half only. जो isospin की वैल्यू है वो half है, but third component दोनों के लिए different है. ठीक है? Is it okay? यही हमने न्यूट्रॉन प्रोटॉन के नंबर से निकाला था, बट एवरी टाइम वी कैन नॉट फाइंड. न्यूक्लियस के लिए दिस इज पॉसिबल. न्यूक्लियस में हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही होते हैं, बट पार्टिकल फिजिक्स में वी हैव सेवरल अदर पार्टिकल्स. So we cannot rely on neutron and proton number for calculation of isospin. That is okay for nuclear reactions or nuclear when you're concerned with the nucleus. Nucleus में और कोई दूसरा particle होता ही नहीं है. But if particle changes, then what we have to do? We have to introduce new. And this is formula is totally depending upon the charge value. So you can say that isospin is nothing but a charge in a different way. You are looking at the charge in a different way. ठीक है? तो अगर आइसोस्पिन कंजर्वेशन आपने चेक कर लिया और अगर आपका कंजर्व हो रहा है किसी रिएक्शन में, इट मींस चार्ज इज आल्सो कंजर्व्ड बिकॉज़ दिस इज अ कैलकुलेशन बेस्ड ऑन चार्ज. So now let us calculate another set of particles. This family have 4 members. So this family is having 2 plus, delta plus, and delta 0 and delta minus. तो इस फैमिली में 4 बच्चे हैं और इन चारों बच्चों के चार्ज हैं 2 plus plus 0 and this. So let us first calculate what is the average value. So what would be the average value? 2 plus 1 3,
3 plus 0, 3, and 3 minus 1, that is 2. And divided by how many? 4 are the members. So this is E by 2. I'm correct? Average value यही होगी इसकी? Yes, sir. Okay. So let us calculate one by one. What is the value of delta 2 plus? Normally 2 plus नहीं लिखते, बुक में आपको दिखेगा ऐसे लिखा हुआ delta plus plus. This is how we write. 2 plus तो मैं लिख रहा हूँ, but delta plus plus लिखा होता है. तो 2 plus charge is there. So what is the T3 value? It has 2E charge divided by E. Formula is same. This one. Total charge of the means charge of the particle divided by E minus average charge divided by E. So this is 2E divided by E minus average is this one. So now it is E by 2 with plus sign है तो plus ही रहेगा, so divided by E. So this is how much? 2 minus half. So what is this number is? 3 by 2. T3 of delta plus. So that is equal to only one plus one charge is there. E minus average is same divided by E. So this will give me 1 minus half. So that is half. This is plus and this is plus. You can do the calculation for other two particles, that is first 0 के लिए करते हैं, उसके बाद minus के लिए करेंगे. So this is 0 and minus half. I will not write E again. So that is minus half. Then you have T3 delta minus. So now this is minus 1 divided by E and E. So I just write minus 1. Let me write E. मैंने D dash लगाया तो E लिख देता हूँ. And minus half E divided by E. So this will give me minus 1 minus half. So that is minus 3 by 2. So minus 3 by 2 minus half and plus 3 by 2. So if you look at this, their T value will be 3 by 2. Highest possible value of T3, which is actually the isospin value. The individual T3 value सभी के different है. All are having different values. In सभी के T3 value, any projection along the experimental axis is different, but their actual value of isospin is 3 by 2. Is it okay? Yes, sir. Okay. So now we can check. Let me write, but कोई reaction लिखूंगा तो फिर उस reaction में आपको बोलो कि इसकी value क्या है, उसकी value क्या है, but you can do the calculation. There is an example which is वो हम ट्यूट में करेंगे उसको मैं ट्यूट में because there is some calculation is also involved in that, so that we will do in the tutorial class. Now we come to the further more conservation law that is concerned with the other properties of quark, that is strange. So seventh one, let me write with a different color, green. So seventh one is strange, strangeness and charm. ठीक है, तो वाइवा देखते हैं अभी कब होगा. पहले मैं इसको आज इस टॉपिक को मैं I want to finish off this topic, so let us wait for the viva. We have discussed several things about the strange. Strange is a very slow reaction. जिस reaction में आपका थोड़ा सा time लेता है और it is not detectable for a certain distance, so that is concerned with the strange, and some other different properties that is concerned with charm and bottom and other things. So how we define? Again, we have to define the number. We have to define the quantum number, and we have to check this quantum number also during any reaction when you write the reaction. So normally हम बेरियम नंबर कैलकुलेट करते हैं, लेप्टॉन नंबर कैलकुलेट करते हैं, आइसोस्पिन कैलकुलेट करते हैं, T3 आइसोस्पिन कैलकुलेट करते हैं और स्ट्रेंजनेस कैलकुलेट करते हैं. वी डोंट गो फॉर चार्म, बॉटम और ट्रुथ और समथिंग लाइक दैट, बट स्ट्रेंजनेस तक बच्चों को हम सोचते हैं कि शायद वो करके आएंगे और वो लिखेंगे भी उसके बारे में. ठीक है. So how we define these numbers actually for any particle? So strangeness is defined as denoted by S,
and that is equal to minus ns minus ns bar. Ns is number of strange quark. Ns bar is number of anti-strange quark. So until unless you know what is the quark composition of any particle, you cannot write this number. जैसे हमने पीछे के नंबर देखे, baryon number was very simple. If it is a baryon, it is 1. If it is anti-baryon, it is -1. If it is not, then it is 0. Lepton number in a similar way, if it is a lepton, this is +1. If it is not, then -1. If it is not at all a lepton, neither normal or nor anti, then it is 0. That was very simple. And T3 के लिए हमारे पास calculation था, तो that is not concerned with any quark. हमें quark का knowledge रखने की जरूरत नहीं थी पिछले तीनों cases में, यानी 4th, 5th and 6th quantum number के लिए. But in 7th, you need to know this number. Means if I give you कि भी proton है, proton is made up of up and down quark, and neutron is made up of down and up quark. Normally we have to write in this way. ये लिखने का तरीका नहीं, up down quark. So its strangeness value, if someone asks you what is the strangeness value of proton or neutron, this is obviously 0. It doesn't have a normal strange quark and it doesn't have an anti-strange quark. उसमें है ही नहीं, यानी सारे quark क्या up या down के हैं, strange quark तो है ही नहीं. So their strangeness number means for proton, strangeness number will be 0. For neutron, the strangeness number will be 0. ठीक है? If I say कि ओमेगा है, ओमेगा के अंदर क्या होता है, तीनों ही स्ट्रेंज क्वार्क होते हैं. All the 3 are strange quark. ठीक है? So this, for this case, omega का strangeness number will be 3 different quark, all are strange quark, so this number is 3. There is no anti-strange quark, so this number is 0. So its strangeness number is -3. If you have any particle, say X particle, and its quark composition is, let us say we have up and this one, then what is the strangeness value of this X particle? What is the strangeness value? How many strange quark we have? 1. माइनस साइन हमेशा आगे यहाँ पे लगाया हुआ माइनस साइन, तो माइनस साइन हम बाहर रखते हैं. 1 minus 1, so that will be 0. Even though this particle is having a strange quark, but in totality the strangeness is 0. It will behave in a normal fashion because it has a strange and anti-strange both, and they can annihilate before doing anything. That is a possibility. And that annihilation can produce a gamma photon, and that gamma photon can generate a U and U bar quark. तो वो हमारा एक normal quark की तरह, normal particle की तरह behave करेगा. So there are so many possibilities. और इतनी possibilities हैं कि they are limitless. Even though this has a strange, but it is 0. If some particle is having सारे select कैसे हो गए? Okay, now it is okay. If your particle having USS, then its strangeness will be -2 -0, so that is -2, and so on. So you can easily calculate. So concerned with the strangeness, this is the calculation. So until unless you know the number of strange quark, number of anti-strange quark, you cannot write this number. पीछे के केसेस में आप लिख सकते थे क्योंकि वहां पे क्वार्क का कोई नॉलेज होने की जरूरत नहीं थी, बट यहाँ पे क्वार्क की नॉलेज चाहिए हमें. Until unless you know these things, you cannot write this strangeness. In the same way, we have charm. charm का भी फॉर्मूला वैसी है, बट यहाँ पे प्लस साइन आ जाता है. So number of charm quark minus number of anti-charm quark. So we can write the charm number for any particle. कोई भी particle in nature में उसका charmness आप लिख सकते हो. Either वो 0 होगा या प्लस हो सकता है या माइनस हो सकता है. That is a possibility. अगर ये नंबर ज्यादा है तो माइनस भी हो सकता है, ये नंबर ज्यादा है तो प्लस हो सकता है, और दोनों नंबर 0 है तो it can be 0. So neutron and proton are 0 charm quark. They are 0 charm particle. They don't have any charm kind of
properties. Then you can write for, I have not written here, but you can write for bottomness and truthness. So I will write that also. But before doing that, what we have to see, the important thing, that in electromagnetic interaction or in a strong interaction, the electromagnetic and strong interaction, in both the cases, the strange and charm quark are there means conserved. But what can happen, that delta S, the change in strangeness, could be plus minus 1 in weak reaction. So अगर कोई रिएक्शन आपने चेक मैंने आपको दिया है, उसमें बेरियम नंबर कंजर्व हो रहा है, लेप्टॉन नंबर कंजर्व हो रहा है, आइसोस्पिन कंजर्व हो रहा है, थर्ड कंपोनेंट ऑफ आइसोस्पिन भी कंजर्व हो रहा है, और जब आपने एस की कैलकुलेशन की तो एस में उसमें +1 यूनिट का डिफरेंस आ रहा है या -1 यूनिट का डिफरेंस आ रहा है. तो अगर आपको ध्यान ना हो तो आप लिख दो कि दिस रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल बिकॉज स्ट्रेंजनेस इज नॉट कंजर्व. बट इन नेचर the strangeness can change by 1 unit in weak interaction. It means that interaction is possible, but that interaction is not a strong interaction, not an electromagnetic interaction, but it is a weak interaction. तो आपको सिर्फ रिएक्शन को यही चेक नहीं करना होता कि अलाउड है या फॉरबिडन है. इवन आपको चेक करना होगा अगर अलाउड है तो किस मोड से अलाउड है. स्ट्रॉन्ग मोड से अलाउड है, यानी स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन से अलाउड है, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन से अलाउड है, या वीक इंटरेक्शन से अलाउड है. तो अगर अलाउड है तो किस वे में अलाउड है, दैट इज ऑल्सो यू हैव टू जज. तो उसके जज करने के तरीके थोड़े से यही होते हैं कि आप स्ट्रेंजनेस, आपका अगर आपका 1 यूनिट का चेंज हो रहा है, देन इट इज अ वीक इंटरेक्शन. Or if you are involving a photons or any kind of field particle, then you can you're not field particle, if you are involving with a photon or you are mostly concerned with the charge, then it is a electromagnetic interaction. And if you don't have a something which you don't look like कि conservation of charge हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मुझे उससे ज्यादा concern नहीं है. आपका T3 तो conserve हो रहा है, और T3 में भी और बेरियम नंबर भी कंजर्व हो रहा है, लेप्टॉन नंबर भी कंजर्व हो रहा है, और स्ट्रेंजनेस भी कंजर्व हो रहा है, then you can say that is a strong interaction or electromagnetic interaction. So we have different way of understanding कि भाई कोई reaction अगर allowed भी है तो किस sense में allowed है. तो charmness में भी यही केस है और bottomness में भी यही केस है. तो they can change by 1 unit in the weak interaction, but strong or electromagnetic में normally they follow the conservation principle, means before the reaction and after the reaction things has to be conserved. Then वन मोर थिंग दैट फाइनली जो इसमें हम इंक्लूड कर लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं, उसके बाद हम इसको एंड करते हैं. इफ यू से कि भाई ये सारे क्वांटम नंबर आपने डिफाइन कर दिए, जिसमें कि आपका बी है, एल है, एस है, फिर आपका टी है, ये सारे आपने न्यू क्वांटम नंबर डिफाइन कर दिए. डू दे हैव एनी रिलेशन अमंग देम, मीन्स ये सब इंडिविजुअली हम इंडिपेंडेंटली डिफाइन कर रहे हैं सभी के लिए, या कोई रिलेशन है इसके आपस में, या जस्ट एक फैंसी नेम थे तो फैंसी क्वांटम नंबर भी डिफाइन कर दिया और सभी इंडिपेंडेंट है, देयर इज नो रिलेशन, यू कैन से. सो डू वी हैव एनी रिलेशन? यस, दे ऑल आर रिलेटेड एंड वेरी डीपली रिलेटेड. हमने डिफाइन करने में कहीं पे भी हमने ऐसा डिफाइन नहीं किया कि ये होगा तो हमें ऐसे डिफाइन करना होगा, तो हमें अगर दूसरे क्वांटम नंबर आप जानते हो तभी आप डिफाइन कर सकते हो. वी डोंट हैव दिस काइंड ऑफ नॉलेज. डिफाइन हमने जनरल वे में कर दिया. And in development also the things has been done in same way. They have defined the things and later someone has found that yes, they have deep interrelation between these quantum number. So there is a formula which is very famous formula which is q, उसका हम derivation वगैरह नहीं कर रहे हैं या कुछ calculation नहीं कर रहे हैं, we just write this formula. This is T3 means q by e. This is a charge by this one, means how much charge in terms of number. Charge will be 1 प्लस हो सकता है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, 2 प्लस इलेक्ट्रॉनिक चार्ज हो सकता है, या माइनस इलेक्ट्रॉनिक चार्ज हो सकता है, डिवाइड बाय इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, so you will get number. +1 है, -1 है, क्या है, that number is here. That is equal to T3 plus, because this is a unitless quantity, this is also, this has to be a unitless quantity, that is why we are dividing with E. And B is, and S is also a unitless quantity, so this is equal to B plus S by 2. This is a very famous formula. It means
all the quantum numbers are interrelated. They are not defined independently. Initially, they have defined in such a way, but they have certain relation. And why they all are related? Because their baryons are made up of quark, and quark is actually doing all the things. जब quark के केस में आप चले जाओगे ना, तो ये नंबर थोड़े से मॉडिफाई हो जाते हैं. अभी हम +1 में चल रहे हैं, बाद में हम इसको 1/3 के टर्म्स में डिफाइन करेंगे. So this is the basic formula which actually interrelate. This is baryon number, this is strangeness, this is a third component of isospin, and this is your charge. So they all are interrelated. Means you can find the charge of any particle if you know these three quantity. अगर आपका उसका बेरियन नंबर पता है, स्ट्रेंजनेस पता है और T3 पता है, तो आप चार्ज निकाल सकते हो उस पार्टिकल का. यू कैन प्रेडिक्ट द चार्ज. तो आप पार्टिकल डिजाइन कर सकते हो, और उस डिजाइनिंग में आपको पता है कि आपने क्या क्या क्वार्क डाले हैं. तो यूजिंग दैट नॉलेज यू कैन से कि उस पार्टिकल का चार्ज इतना होगा, दैट आई प्रेडिक्ट. सो व्हेन इट विल बी मेजर्ड, यू विल गेट द सेम काइंड ऑफ थिंग. सो दिस इज एक्चुअली नोन एज गेलमैन निशिजामा, Nishijima कहते हैं. It is Japanese name, Nishijima formula. And I think they have got the Nobel Prize for this relation also, and they have also discussed the quark model of this particle that we will discuss later. नेक्स्ट क्लास में करेंगे. इस फॉर्मूले को और एक्सटेंड भी कर सकते हो, बिकॉज आपने यहाँ पे सिर्फ स्ट्रेंजनेस और बेरियन नंबर को डिफाइन किया, बाकी नंबर क्या इसमें रिलेट हो पाते हैं? यस, दे आल्सो गेट रिलेटेड. B plus S plus C also, if you do, you will get the same number. So there is no difference. And now you can do the bottom and topness also, you can add them. So they will give you the same formula. So this is the basic formula which actually means they make an interrelation between these quantum numbers. They are not fancy quantum numbers. तो कभी ऐसा मत सोचना कि बस हमने डिफाइन कर दिया अपनी मैथमेटिकल इक्वेशंस को देखने के लिए, कि भी सॉल्व करने के लिए, इक्वेशंस को देखने के लिए. इट इज नॉट सो. They have interrelation and we need to derive these formula. तो अभी हम नहीं करेंगे, हमारे सिलेबस के उस पार्ट में नहीं है, but you can do that in masters. And this is a Gilman-Nishijima formula. And why this formula is coming out? Because they understood that they are made up of quark and how the quark is arranged among these things. That is why we are getting this kind of symmetry or this kind of conservation law. तो हम जब ट्यूटोरियल करेंगे, ट्यूटोरियल में हम कुछ रिएक्शंस लेंगे एंड वी विल ट्राई टू चेक द रिएक्शन दैट इट इज फॉरबिडन और अलाउड, एंड इफ इट इज अलाउड व्हाट काइंड ऑफ इंटरेक्शन इज गोइंग ऑन. ठीक है, तो वो हम उसमें करेंगे. अब मेरे ख्याल से टाइम थोड़ा खत्म ही हो गया, आज लाइट भी चली गई थी, मींस पावर चला गया था. तो क्या करें, कितने बच्चे हैं इसमें? बाकी बच्चे लीव कर सकते हैं. इफ हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर हु आर गोइंग टू गिव द वाइवा? कौन कौन है सर? हाँ बोलो सर. एस की वैल्यू पॉजिटिव हो सकती है. एस की वैल्यू पॉजिटिव हो सकती है अगर आपका स्ट्रेंज क्वार्क ज्यादा है तो. एक बार चेक करें. अगर स्ट्रेंज नहीं, हाँ, Yes, sir. अगर आपका एंटी स्ट्रेंज ज्यादा है तो देन इट इज पॉजिटिव. आपका स्ट्रेंज अगर ज्यादा है तो नेगेटिव नंबर आएगा ना, उसमें माइनस साइन लगा हुआ है ना. तो माइनस एन एस बार है. एन एस बार अगर किसी पार्टिकल में आपके पास एंटी क्वार्क, दो स्ट्रेंज क्वार्क है और 0 नॉर्मल स्ट्रेंज क्वार्क है, सो देन इट विल बी पॉजिटिव. दैट इज अ पॉसिबिलिटी. सर एस इक्वल टू 0 का मतलब है कि स्ट्रेंजली बिहेव नहीं करेगा, तो पॉजिटिव वैल्यू इट विल नॉट बिहेव. यस, अगर एस 0 है तो it will not behave in a weird form, which is normally called as strange. But yes, if you are able to do the reactions, if you are able to check the indirectly how this particle has been formed, if you check the other things, then you can say कि normally होता है क्या है कि जो quark और anti quark pair है ना, they can easily form a gluons, and when they form a gluon, they can generate a gluon. Gluon is nothing but a photon kind of thing, and these can generate quark and anti-quark pair. They can even generate electron and positron pair. तो ग्लूऑन की पॉसिबिलिटी है. मींस आपके पास जब भी क्वार्क और एंटी क्वार्क का पेयर है तो दे कैन कंबाइन, दे कैन एनिलेट इजीली. तो बड़ा मुश्किल होता है इनको जज करना. इवन मेसॉन्स कैसे एग्जिस्ट करते हैं, हाउ दे आर एग्जिस्टिंग, बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ क्वार्क एंड एंटी क्वार्क पेयर, एंड क्वार्क एंड एंटी क्वार्क पेयर हैज अ full capability of getting annihilated themselves. So still they are existing, but obviously they are existing for a very shorter duration of time. So yes, S positive possible है अगर आपके पास एंटी स्ट्रेंज क्वार्क ज्यादा है तो.
और अगर s की वैल्यू 0 आ रही है किसी पार्टिकल की टोटलिटी में, तो ऑब्वियसली दे आर गोइंग टू बिहेव इन अ नॉर्मल फैशन। s ग्रेटर देन 0 के लिए भी सेम मीनिंग होगा? नहीं, तब भी वो स्ट्रेंज है ना। स्ट्रेंज नेगेटिव, स्ट्रेंज पॉजिटिव इज अ स्ट्रेंज। Yes, sir. स्ट्रेंज नेगेटिव एंड स्ट्रेंज पॉजिटिव इज अ स्ट्रेंज पार्टिकल ओनली। एंटी स्ट्रेंज है ना उसमें। एंटी स्ट्रेंज का मीनिंग ये नहीं कि वो स्ट्रेंज का अगेंस्ट है। एंटी स्ट्रेंज मींस quark is strange as an anti-strange quark. That is a different thing. जैसे U है, U का बार अगर मैं लगा दूं तो U bar is a normal quark only, but it is an anti-up quark. So it is not going to behave as a different thing. It will behave as a normal quark only, but it is an anti-up quark. और quark में क्या होता है कि इनके पास चार्ज होती हैं, तो U के पास +2/3 का चार्ज है और D के पास आपका -1/3 का चार्ज है। तो जो एंटी यू क्वार्क है उसके पास -2/3 का चार्ज है और D के पास +1/3 का जो एंटी D क्वार्क होगा। तो चार्ज में उनके पास डिफरेंस है, जैसे इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन में होता है। ठीक है, चार्ज विल बी ऑपोजिट। यस सर। ओके, हाँ वाइवा किसका है, किसी का है भी? अजय आपको तो शायद देना था। यस सर। हाँ तो वाइवा, जितने बच्चों का वाइवा है दे विल स्टे एंड द अदर कैन लीव। I just stop the recording and other can leave and we will just take the viva. If you want to stay, you can stay here.